तो होटल से इंस्टाग्राम पे आपने कब, when did you start your social media like सोशल fame? मीडिया वाज ऑलवेज देयर. हाँ. मैं अभी भी कहता हूँ कि मैं सब कुछ पोस्ट करता था. आई वाज जस्ट बीइंग माई सेल्फ. Right. मुझे अभी भी याद है कि मैं जंक फूड भी कहता था, वाओ हैविंग सम बर्गर, लाइक यू नो सब लोग अभी तो करते you don't eat junk food अब भी, मैं हाँ. जरा ना, अब तो जरा बहुत ज्यादा रिफाइन कर लिया कि अपनी फिगर को जो है ना वो जरा फॉलो करने, बिकॉज दिस Ken doll image is also very difficult because you have I am following very certain diet. I'm eating always clean food. I'm eating less carbs. I'm eating more chicken and vegetables. I'm making sure when I wake up in the morning I don't take my breakfast. I take my collagen. Then I give 1 hour to myself. Then I take my nuts. एक second, what do you mean you take your collagen? I take the collagen mixer. So morning में supplement होता है collagen का. Okay. वो मैं उसका glass पीता हूँ. क्योंकि वो आपको empty stomach पीना होता है. Is that healthy? It's very healthy. Okay. Because 25 जब आपकी एज होती है ना, उसके बाद जो आपका कोलेजन प्रोडक्शन बॉडी के अंदर कम होना शुरू हो जाती है. उससे क्या होता है? उससे आपकी स्किन प्लम्प रहती है, आप यंग रहते हो, आपकी इलास्टिसिटी बढ़ती है बॉडी के अंदर, स्किन के अंदर. तो इसलिए अब मैं So a glass of collagen for breakfast. Yes. अरे doesn't sound very appetizing but okay. मगर करते हैं, करना पड़ता है because this is an investment. मैं हमेशा कहता हूँ कि जो मैं कर रहा हूँ अपनी स्किन के साथ, अपने फेस के साथ, अपनी नोज के साथ, अपने बालों के साथ, is just an investment. अच्छा, तो कोलेजन से नाश्ता किया? कोलेजन से नाश्ता किया, उसके बाद 1 घंटे बाद यू ऑलवेज हैव टू गिव 1 आवर टू द कोलेजन के बॉडी में अब्सॉर्ब होता है. ठीक है. उसके बाद मैं टेक माई ग्रीक योगर्ट, लो फैट, उसमें थोड़ी सी बेरीज डाल के, थोड़े से फ्लैक्स सीड्स डाल के वो खाया. मैं पूरा दिन खाता हूँ वैसे, मेरे 3 मील्स नहीं है. ओके. तो इसके बाद 2 घंटे बाद अराउंड 12 o'clock I will have some nuts. उसके बाद जो है लंच आ जाता है, उसके अंदर थोड़ा सा I'll take some rice, उसके वेजिटेबल्स एंड चिकन. ये 3 चीज़ें लाजमी लेता हूँ बिकॉज मेरी बॉडी बहुत स्लिम हो जाती है अगर मैं ना लूँ. तो मुझे अपने मसल्स को फीड करना पड़ता है साथ साथ. एंड आई गो रेगुलरली टू जिम. देयर इज नो डे ऑफ फॉर द जिम. Like every day? Every day. Okay. If I don't go to gym, at least I do cardio. Right. I need to make myself sweat. If I don't have even time for cardio, I close the doors, I play the music, at least I dance on 3 और 4-5 गानों पे अच्छी तरह खुद ही डांस करके, खुद ही खुश होके Sweat it out. Sweat it out. हाँ. But then it also makes you happy in that day. It does. Dance makes you happy. Exactly. Dancing makes you happy. It gives you happy hormones in the body. Totally. Yes. Absolutely. ज़रूरी है, happy hormones are very important. बिल्कुल. हाँ. So very balanced diet all day. No junk food. No junk food. Junk food once a week. हाँ. Because मुझे अपनी वो जो food collaborations हैं उनको भी ऐड करना होता है. As a lifestyle, अब beauty in influencer कम हो गया, अब lifestyle ज़्यादा हो गया. Because people they are following the lifestyle I have, the restaurants that I suggest. So दुबई के जितने भी top restaurants होते हैं, मेरी हमेशा ये डिमांड होती है, sorry 5 stars only. So उसमें जो है हमेशा I have to go to those restaurants. अभी recently मैंने बिलकांटो है ओपरा हाउस के अंदर दुबई के अंदर, बेहतरीन खूबसूरत रेस्टोरेंट है. आपको लेके जाऊंगा जब आप दुबई आएंगी. बस ये होगा ना, अब मैं वही सोच रही हूँ कि अब अगली दफा आऊंगी दुबई तो I mean I have to take recommendations from you कि भाई recommendation and I have to take you to Belcanto with me. It's one of the best, like you know, बड़ा nice Italian restaurant है. तो भी like उनके पेज पे आप जाएंगे तो again your boy is there. So ये बात है कि इसलिए मैं lifestyle के साथ अपनी gym, food, अब जो recently driving license लिया, why? Because I want to bring the supercars into my content. Nice. Because अभी जो है following में माशाल्लाह 85% ख़वातीन हैं और बाकी 25% मर्द हज़रात हैं, 15% जो आते हैं. मगर उसको ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट लाने के लिए मैं कार्स भी लेके आऊँ ताकि एवरीबॉडी कैन रिलेट. अभी मैंने रिसेंटली गेमिंग्स भी लेके आया साथ, तो टेक के साथ है, तो दुबई में काफ़ी सारी मैंने गेमिंग कंपनीज के साथ भी कोलैब किया है. सो दैट इज लाइक यू नो आई वांट टू ऑलवेज लर्न समथिंग न्यू. देयर इज ऑलवेज अ लस्ट ऑफ लर्निंग समथिंग न्यू. एंड नाउ दिस इज योर सिंगल फोकस इन लाइफ नाउ एज एन इन्फ्लुएंसर, राइट? लोगों का ख्याल है बड़ा आसान है यार, कैमरा उठाया शुरू हो गए, हर बंदा शुरू हो जाता है, बट आपके लिए ऐसा नहीं है. यू हैव अ होल टीम वर्किंग विद यू. और कितनी बड़ी प्रोडक्शन है? अभी आपने जिस कैमरा उठाने की बात की, अभी कुछ अर्सा पहले आपने देखा कि न्यूज़ के अंदर मेरा एक बड़ा आया था कि मैंने किसी को स्पेसिफिकली पॉइंट आउट किया. मैंने किसी को पॉइंट आउट नहीं किया, कभी किसी का नाम नहीं लेता. कि दिखाया था एक जी जो यू नो आप वैसलीन में थोड़ी सी मिर्च, थोड़ी सी दालचीनी लगाएं. Why would you do that to someone? अगर हमारा एक 10 साल का बच्चा जाके कर देगा, he will burn his skin. So for me it's a very big responsibility. ये responsibility है कि आप क्या किसी को दे रहे हो. मैंने अगर किसी को नोज जॉब, हेयर ट्रांसप्लांट, बोटॉक्स, फिलर्स सजेस्ट किए हैं, वो अपने पे करके किए हैं. आई ऑलवेज डू इट ऑन माई सेल्फ. अच्छा चलो आज बता ही दो अदनान, क्या क्या किया है अपने पे. अच्छा ऊपर से शुरू करो. ऊपर से शुरू करते हैं. बालों से शुरू करते हैं. तो मैंने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है जी. क्यों? ज्यादा चाहिए थे बाल या you want more denser hair? Dense, exactly. Skin density hair. Exactly. Blonde नहीं हुए लेकिन. Blonde अंदर स्प्रे करते तो कभी-कभी ना. मैं अपनी कुछ पिक्चर चेक नहीं की मैंने. ब्लॉन्ड करता हूं अंदर.
और उससे फिर आप नीचे आते हैं तो ऑफ कोर्स बोटॉक्स आ जाते हैं, देन आईब्रोज ऑफ कोर्स. बट यू आर सो यंग, बोटॉक्स की जरूरत थी? बिकॉज आई एम अ वेरी एक्सप्रेशनल पर्सन. जब मैं बात करता हूँ बहुत मैं फेस लाता हूँ, अपने आईब्रोज इधर, आंखें उधर उधर जा रही होती हैं, तो उन सबको सेटल करने के लिए एक very calm face. And did you want like to look like a doll, like you wanted that? No, you just have to enhance that features for sure. Right. You want to make sure that if you say Ken doll and then एक बंदा ऐसे ही बड़ा, you have to really work on that. And I liked working on it. I didn't overdo it as compared to the other Ken doll figures that we have around the world. We do have some people back in US, but I don't want to go that far. मैं चाहता हूँ कि मैं natural अपनी look रखूँ, जो मेरे अपनी मुल्क के जो feature हैं, strong features, उनको उससे रखूँ. So moving on to the eyebrows, I did the laser for sure, but I had natural good eyebrows. I didn't touch them. Then moving on to the nose, मेरी थोड़ी सी droppy, जो थोड़ी सी गोल मटोल सी नाक थी, उसको फिर हमने rhinoplasty किया ताकि आपकी side profile जो है वो pointed हो जाए. How painful was that? It wasn't that painful. Come on. It wasn't that painful. Really? हाँ, क्योंकि राइनोप्लास्टी एक ज़माना था कि लोग क्लासिक करते थे, वो डीकंस्ट्रक्ट करके लोगों की नाक, वो हम सुनते थे ना, नाक खराब हो गई, जो कहते हैं नाक तोड़नी पड़ती है बनाने से पहले. डीकंस्ट्रक्ट होता है ना, वो फिर नाक रिकवर होती है, उसे मंथ लगते हैं. मुझे मैंने करवाया था वो प्याजो था. प्याजो टेक्निक थी जो टर्की में हो रही थी, जिसमें एक अल्ट्रासाउंड पेन लिया जाता है, उसकी वाइब्रेशन इतनी तेज है कि वो बोन को काट देता है. So when they did of course it's an open surgery, वो खोलते हैं, then in between आपको पिक्चर्स भी साथ शेयर करूंगा, उसके अंदर then they shape your bones and then they stitch and they put your skin back. हमारी नाक हम समझते हैं हमेशा कि ये एक हार्ड चीज है, ये नहीं है, ये सिर्फ बोन है, कार्ट्रिज है बिल्कुल, और ऊपर सिर्फ इसकी स्किन आई हुई है. तो उसके लिए of course मैंने की थी. Then I did little bit of lip fillers, tiny bit, only upper, because lower on my mom never let me touch because she said she loves the line. So मैं कोई टच नहीं किया. थोड़ी सी chin fillers है, और फिर बॉडी में आते तो फुल बॉडी लेजर. एंड देन ये इस एरिया की, एब्डोमिनल एरिया की मैं फैट फ्रीजिंग मंथली करता हूँ ताकि वो शेप जो है ऐसी रहे. बिल्कुल बिल्कुल. कोई एडेड फैट. व्हाट इज फैट फ्रीजिंग? Fat freezing. What the hell is fat freezing? What the hell is fat freezing? Fat freezing is called the cold sculpturing. और ये इस तरह होता है कि आपकी बॉडी को बेसिकली जो हमारी बॉडी होती है, आपकी स्किन से पहले आपका फैट फ्रीज होता है. साइंटिफिकली ठीक है. उसमें क्या होता है, अगर किसी -6 to -10 का टेम्परेचर जो होता है, वो एक पैडल्स होते हैं जो आपके पेट पे लगाए जाते हैं, और वो वैक्यूम करते हैं और साथ आपके पेट पे लगा देते हैं उनको. उससे आपकी स्किन फ्रीज नहीं होती, क्योंकि आपकी स्किन में जो है वो रहती है, मगर जो नीचे फैट होता है वो जब 10 की से जब मिलती है ना, फ्रीजिंग पॉइंट मिलता है, तो वो क्रिस्टलाइज हो जाता है. मनहूस जाता कहाँ है? और उसके बाद वो जो क्रिस्टलाइज फैट होता है वो मेल्ट होना शुरू होता है. जितना आप वर्कआउट करें, जितना आप नहाएं, उस एरिया को मसाज करें, तो वो जो चीज़ है वो साथ आपकी जो है ना श्रिंक होना शुरू हो जाती है. क्योंकि जब फैट एक दफ़ा फ्रीज हो गया ना, उसने मेल्ट होके दोबारा फैट नहीं बनना, उसने मेल्ट होके आपके बॉडी से निकल जाना है. उस दौरान आप बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं और बहुत सारा फाइबर खाते हैं ताकि आपकी बॉडी से डिटॉक्स हो जाए. तो वो मैं मंथली लाजम करता हूँ, टू मेक श्योर दैट आई हैव दिस नाइस वी शेप. तो जो हमारी इंटरनेशनल बार्बीज हैं, फॉर एग्जांपल बार्बी डॉल्स, जो ह्यूमन बार्बी डॉल्स हैं, वो तो अपनी रिब्स वगैरह भी निकलवाते हैं. रिब्स निकलवाते हैं बिल्कुल. आपने ऐसा तो कुछ नहीं किया? मैंने रिब्स नहीं निकलवाई, मुझे जरूरत नहीं पड़ी. अंदर से थोड़ा सा दिल किया तो मैं डॉक्टर पूछा कि जरूरत है एक दो निकलवाने की, उसने कहा नहीं बेटा, अपनी पसलियां अपने पास रखो. इसकी तुम्हें जरूरत है, तुम लंबे हो तो अपनी पसलियों को ना छेड़ो. ये you have an advantage की हाइट है. हाँ जी, हाइट मेरी अच्छी है, तभी मैं उसको फिर अपनी जिम के लिए, that's what I said, I don't go extreme, I still keep it little bit, not little bit, a lot, natural. तभी मैं जिम जाता हूँ to make sure to work out a lot so my upper body becomes wider, then lower body becomes in a shape. तो इसके लिए फिर मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, no matter how long I day had, but still I want to make sure कि मैं एक दफ़ा कुछ burn कर लूँ लाजमी. Otherwise मैं खाने में compensate करता हूँ, मैं खाना कम खा लेता हूँ, at least to maintain the entire thing. Adnan, I'm going to take a minute here to insert a question that's very important, और पता नहीं ये रहा कैसे गया. आप बहुत एक पॉजिटिव इंसान हैं. Your changes have been done in a very healthy and constructive way, and you stay happy and healthy. लेकिन ये बहुत ज़रूरी सवाल है that आजकल की दुनिया में, especially in the fashion industry and in the influencers की दुनिया, ये हेल्दी और अनहेल्दी की लाइन बहुत ही पतली रह गई है. बिकॉज प्रेशर इतना ज़्यादा है टू लुक अ सर्टन वे, टू बी अ लिटिल थिनर, टू बी हैव अ लिटिल बेटर हेयर, बेटर स्किन, कि इसकी क्या लिमिट क्या है, हद क्या है इसकी. बिकॉज वी नो कि फ्रॉम अ हेल्दी बॉडी इमेज वी कैन गो इन टू बॉडी डिस्मोर्फिया वेरी क्विकली.
बॉडी डिस्मॉर्फिया क्या है कि जी आप कभी भी अपनी अपीयरेंस के साथ खुशी नहीं होते. वज़न लूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा और लूज़ कर दें. उसके बाद बुलिमिया, एनोरेक्सिया, दीज आर ऑल वेरी वेरी रियल इश्यूज़. सो एज एन इन्फ्लुएंसर, what is your advice for people where to draw the line, how to stay physically healthy and mentally healthy? Because these are two extremely important questions. आप इसका जवाब दे दें and then we'll continue with the interview. Ji, I completely agree with you with regards to this body dysmorphia, and there is definitely a very thin line, or basically आपको पता ही नहीं चलता the moment you switch into the ugly side of this word. उसके लिए how I prevent myself, my doctors are few doctors that I professionally go with, and then few doctors are my friends. I always make sure that if I'm about to do something, I ask the doctor who is my friend, like, hey, I'm planning to do this one. Do you think so? Is it right? So if they're like, hey, don't overdo it, it's too much, then I always listen to their advice, because you need to make sure that, yes, there is one doctor who wants to work with you to build up their name, but then there is one doctor that you're on the other side who is your friend and who will give you the right advice. I always make sure to have it. And also how I can keep myself very in a perfect shape, I always keep the measurements, like how I am and how is my waist, how is my body, how is my face. And even when I went for the hair transplant, I did had a little mark, a little pigmentation I have done on my scalp. So I knew on one certain point, if I will start losing hair on that specific pigmentation that I had drawn on my head, I need to do a transplant. And that's what happened. So when I had my that visible pigmentation on my scalp, I was like, okay, now this is the right time to do my transplant. I discussed with my friends and then discussed with the doctors and everything, and I was like, this is the perfect time to do it. So this is how you measure it. You make sure that you listen to people who are your close ones.